नमस्कार बहनों भाइयों नॉन बाइनरी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका चिल टाइम में। दिस बुक was recommended by Abhinav. You know Abhinav from episode 3 of Chill Time. And when I was discussing some other books with him, और उसमें से उसने सजेस्ट किया कि अरे आपको ये बुक पढ़ना चाहिए. दिस इज द मून एंड सिक्सपेंस बाय विलियम सोमरसेट मॉगम. Somerset, my favorite paper. Uh, why did I even make the joke? 80% of you are not going to get the joke. Anyway, so Moon and Sixpence by William Maugham. And when Abhinav was recommending me this book, he was like, okay, it's a good book, it's a nice chill read, and it's based on the life of Paul Gauguin, who is an actual living artist. किसी ज़माने में जिंदा थे भाई साहब. इट्स नॉट अ फिक्शनल कैरेक्टर, बट चार्ल्स स्ट्रिकलैंड जो पॉल गॉगिन के इंस्पायर्ड कैरेक्टर है, वो कम्प्लीटली फिक्शन है. उनका कोई रिलेशन नहीं है किसी चीज़ से. तो while I was doing some research on Mr. Maugham here, his life was quite interesting, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें नहीं पता उनके लाइफ के बारे में. पर most important thing to know is like some context. I don't know if this review will help you enjoy the story more, but man, I really enjoyed the story. The short review is amazing recommendation. प्लीज़ जाके खरीदिए, प्लीज़ जाके पढ़िए. और अगर आप आर्टिस्ट है, then I have very mixed feelings to recommend this to you, which I'll get into in few minutes. तो विलियम सॉमरसेट मॉगम अब ज़्यादा फेमस है. 90s 30s में उन्होंने ज़्यादा प्लेस लिखे, ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखे, प्रोज लिखे. एंड ही वॉज टेक्निकली, मतलब ही वॉज एजुकेटेड टू बी अ फिजिशियन, पर उन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की. उन्होंने डिग्री लेने के बाद सीधा फुल टाइम राइटर बन गए. And in 1930s, France, England, that whole circle. There was even in 30s, mid 30s, 1930s में there was a time जब उनके चार plays एक ही टाइम पे लंदन में चल रहे थे. तो he became very famous. A lot of critics had a lot of things to say about him, of course. But later in his life, people started recognizing him for his simplicity, and that's what this book is about. Like, this book is written so simply, and it really shows who Maugham is or what his background is. क्योंकि मुझे नहीं पता था जब मैं पढ़ना शुरू किया. पढ़ने के बाद जब मैं अब रिसर्च किया इस टॉपिक के ऊपर, तो अब everything makes sense in a weird way, cause Moon and Sixpence has nothing to do with Maugham's life. It's a completely fictional story. It's based on a real person who is Paul Gauguin. And Paul Gauguin का time period is 1848 to 1903. He died before Maugham had any chance to like even see him or meet him. Like, there is no way they both met, but the way story is written, you actually feel like कभी मिले हो क्या, सच में मिले थे ये लोग. Like, it's so naturally written, it's so nicely written, and it's very simply written. And मैं जब थोड़े रिव्यूज और सब देख रहा था, तो बहुत लोगों ने कहा कि that's the Maugham effect. Maugham effect is स्टोरी को या प्रोस को इतने सिंपल तरीके से लिखते हो कि जब उसका डायलॉग आता है तो वो डायलॉग रियल इम्पैक्ट देता है. एंड दैट्स द Maugham इफेक्ट, which was very new for his time, which is in the 30s. And I agree with that. Like, the dialogues are very impactful, and it is a very dialogue heavy story. And it's a very it's from a perspective of the character of the author, if that makes sense.
कि अगर ऑथर खुद को एक कैरेक्टर की तरह पेश करता है तो वो फर्स्ट पर्सन में पूरा बता रहा है कि हाँ आई मेट चार्ल्स स्ट्रिकलैंड और ये हुआ वो हुआ एंड ऑल दैट. पर अनदर इम्पोर्टेंट थिंग्स जो बुक के पीछे भी आपको मिल जाएगी, विच इज The Moon and Sixpence is at once a satiric caricature of Edwardian conventions and a vivid portrayal of the mentality of a genius. Edwardian conventions, Edwardian conventions. That's like a signature of Maugham. कि हर कहानी में वो अपने हर शॉर्ट स्टोरीज प्लेस में एक एलिमेंट ये भी है मौगाम का कि वो उस समय के कन्वेंशंस, उस समय के विचारधारा के साथ सटायर करता है या फिर उसका मजाक बनाने की कोशिश करते हैं या फिर इन हिंदी इट्स कॉल्ड व्यंग करते हैं. I just love saying व्यंग. And you can see that but it's done in such a clever way that it doesn't feel preachy. Because it's very easy to write a story and because मैं नरेटर हूँ, मैं मेरे पर्सपेक्टिव से स्टोरी लिख रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. I have the platform, right? जबकि Maugham does it pretty cleverly through Charles Strickland का character, that how he is a very rude character, he's a very crude character, he's just mean to everybody and he doesn't care about anybody's emotion, but despite that his selfish exterior, on the inside he's like an animal. There is a primal element to him और Maugham उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है. एंड थ्रू चार्ल्स स्ट्रिकलैंड ही इज क्रिएटिंग दिस सीन्स बिटवीन और ये इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल कैरेक्टर्स. और चार्ल्स स्ट्रिकलैंड एक लेडी से कैसे बात करेगा तो वो ऐसे बात करेगा, वो एक अपने दोस्त से कैसे बात करेगा तो ऐसे बात करेगा, वो एक डीलर से कैसे बात करेगा तो ऐसे बात करेगा. तो थ्रू चार्ल्स स्ट्रिकलैंड ही इज हैविंग फन विद द सटायर एंड प्लेइंग विद क्लीशेज उस टाइम के. And another thing which I found interesting about Maugham was कि उसके शुरू के जो प्लेस थे, शुरू के जो नॉवेल्स थे, तो सारे रिव्यूज़, सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि बस क्लीशे है भाई साहब, क्लीशे में ही काम करते हैं, जो चल रहा है वही चला रहे हैं, ऐसे में ही स्टोरी लिख रहा है ये वो. And seeing that once he got some recognition and once he started writing proper novellas, कैसे वो क्लीशेस को ही जोक बना रहे हैं, क्लीशेस के ऊपर ही सटायर कर रहे हैं. तो दैट इज समथिंग आई फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट हिम. पर यस, विदाउट स्पॉइलिंग द होल स्टोरी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. और अब मैं इस बात पे आता हूँ कि मैं क्यों एक दूसरे आर्टिस्ट को रेकमेंड करने से थोड़ा अच्छा झिझक रहा हूँ. इफ़ यू आर ए यंग आर्टिस्ट मत पढ़िए प्लीज़. उसका भी मैं रीज़न आपको बताता हूँ. पर इफ़ यू आर ए वेटरन आर्टिस्ट और इफ़ यू आर समवन लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन और थोड़ा आर्टिस्ट ड्रामा पढ़ना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ गुड बुक, दिस अ जेन्युइनली गुड बुक. And the clever thing about this book is that Charles Strickland is not redeemable. और ये बुक में लिखा गया है कि whatever I'm saying is like part of the book. Like somewhere in the book he has written like Charles Strickland is not a redeemable person, but he did achieve something. He did do something with his life that is admirable in some sense. And the way Maugham's character, the author's character, reaches to that conclusion is very interesting, because there is a part in the story almost like almost in the middle. I think I marked this like somewhere like here. I don't know if camera can see this. Somewhere in the middle, something really tragic happens, but that is the real like climax
of the story, but there are few climaxes. Why did I say that? But there are like few high points. There are few high points in this novel, and this is the first like proper big high point of the novel. And I almost didn't want to continue. I almost quit the book because it it just made an impact, and impact in a way that I don't know what to feel about Charles Strickland anymore. I don't know what to feel about even Mogam. Like how is he gonna navigate further and from this incident? And but it's a very major incident that happens, after which Charles Strickland actually leaves Paris to Tahiti, which happens in Paul Gauguin's actual life, that he leaves Paris for good and then lives rest of his life in Tahiti. And that part was really interesting, and I think that's where the book really shines. But you have to go through the whole first part of the book to really enjoy the second half of the book, because second half of the book is why I'm like, dude, you should read this. And thank you, Abhinav, for giving me this book, because the second part is amazing. Because in the second part, Charles Strickland is dead. So no more interaction from Charles Strickland, but in second half of the book, the author goes to Tahiti after Charles Strickland is dead for a few years. So it's from a very third person perspective, a very reporter investigation perspective, like what was your interaction like with Charles Strickland? आपने क्या बात किया चार्ल्स स्ट्रिकलैंड से? चार्ल्स स्ट्रिकलैंड कैसा कैरेक्टर है? अरे मैं जानता हूँ, सुनो ऐसे थे वैसे थे, हम ये करते थे वो. And that's really interesting, that whole part, and how people of Tahiti, Tahiti में जो लोग रहते हैं, not the indigenous but the Englishmen and the Europeans जो वहाँ पे शुरू में बसे और जिनके फार्म्स है, वो जिस तरह से चार्ल्स स्ट्रिकलैंड को डिस्क्राइब करते हैं और जिस तरह से वो चार्ल्स स्ट्रिकलैंड को डिफेंड करते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. क्योंकि अब तक आपको सिर्फ इतना मालूम है कि चार्ल्स स्ट्रिकलैंड इज नॉट रिडीमेबल, इट्स नॉट a character you want to even meet in real life, to be very honest. Doesn't matter how genius he is, doesn't matter how important or impactful his work is. As a person, you just don't want to meet him. And after the whole Tahiti thing, the way the author gets closer on the whole life of Charles Strickland is very interesting and very inspiring. I almost was going to put this book in the book that changed my life video, but it didn't change my life completely. But it did made me think about how, as an artist, आप हमेशा सोचते हो कि करियर होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पेंटिंग्स बनाएंगे, गैलरी जाएंगे, इसको देंगे, उसको देंगे. How career oriented you are as an artist, or how professional you are as an artist, and at the same time making art for art's sake, like Charles Strickland. Paul Gauguin did sold some of his work during his time, but general criticism of Paul Gauguin was कि like formally trained नहीं है, हार्ट उनका इतना अच्छा नहीं है, कलर्स ठीक से यूज नहीं किए हैं. And I want to share one line from this book इस चीज़ को लेके, which is also my favorite line of the whole book. I think that my taste is good, but I am conscious that it has no originality. So जब हम आर्ट वर्क को देखते हैं या उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि कलर्स ठीक नहीं है, स्ट्रोक ठीक से नहीं लगाया है, कुछ भी बनाया है, या फिर एस्थेटिकली मेरे सेंस में नहीं बैठता, या फिर स्किल नहीं है, पर एट द सेम टाइम
पॉल गॉगिन के काम में, या फिर जिस तरह से मॉगाम चार्ल्स स्ट्रिकलैंड के काम को देखते हुए बोलते हैं कि टेक्निकल लेवल पे, ट्रेंड के लेवल पे मुझे पता है कि मेरा टेस्ट अच्छा है, मुझे पता है कि मोनेट अच्छा पेंटिंग है, सूरत अच्छा पेंटिंग है, टूलूस लूट्रेक अच्छा पेंटिंग है, लेकिन चार्ल्स स्ट्रिकलैंड को मैं अच्छा पेंटिंग नहीं बोल रहा हूँ, पॉल गॉगिन को मैं अच्छा पेंटिंग नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा टेस्ट अच्छा है टेक्निकल लेवल पे, लेकिन एट द सेम टाइम आई नो कि मेरा टेस्ट ओरिजिनल नहीं है। मैं ये नई चीज़ को मैं पसंद आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एंड दैट्स वेयर ही डिस्क्राइब्स चार्ल्स स्ट्रिकलैंड in a way he is describing Paul Gauguin. That there is something primal about it, there is something rage about him, there is something, a very primitive force in his painting, जो मेरे समझ के बाहर है, जो मेरे civilized manner, एडवर्डियन कन्वेंशंस के समझ के बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काम में दम नहीं है। एंड that's inspiring, that's food for thought, that's something you should think as an artist, कि critics तो कहते रहेंगे आप काम बनाओ, लेकिन at the same time आप ये भी एक्सपेक्टेशन में मत रहो कि हाँ बस मैं फेमस हो जाऊँगा ऐसे ही। आपको फेमस होना है, आपको करियर बनाना है एज एन आर्टिस्ट, there are ways to be professional, there are road maps which you can follow. And the thing with Charles Strickland और Paul Gauguin, जिस तरह से बुक में डिस्क्राइब किया गया है, आपको also this is not a historical representation, disclaimer, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि Paul Gauguin डिस्क्राइब हो रहा है, but this is not historical non-fiction, this is a fiction, and please treat it that way. पर it's really nice to see Maugham thought on Paul Gauguin, पर उन्होंने ऐसे घुमा के पॉल गॉगिन का रिव्यू दे रहे हैं, तो पर इन द बुक ही डज से दैट पॉल गॉगिन, चार्ल्स स्ट्रिकलैंड, सॉरी आई एम कंफ्यूज, चार्ल्स स्ट्रिकलैंड डिवोर्स लेके लंदन से स्टॉक ब्रोकिंग का जॉब लेके वो पेरिस आ गए आर्टिस्ट बनने, सब कुछ छोड़ छाड़ के, घर बार सब छोड़ छाड़ के, और जब पूछा गया कि क्यों तुम्हारा अच्छा जिंदगी कट रहा था, क्यों छोड़ दिया, एंड ही जस्ट सेड आई जस्ट वांट टू पेंट, एंड दैट्स व्हाट ही डज, ही पेंट्स। थोड़ा बहुत पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, पर आर्ट के थ्रू नहीं। लाइक द चार्ल्स स्ट्रिकलैंड, I don't know what Paul Gauguin in this matter, but Charles Strickland doesn't sell his painting, doesn't show his painting. He just paints. और सर्वाइव करने के लिए कुछ भी काम कर लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ कमीशन कर लेंगे, ब्रेड पे निकाल लेंगे, मर जाएंगे चलेगा, लेकिन पेंटिंग बनानी है, अपने लिए बनानी है। एंड then leaving Paris completely to an island जहाँ पे कुछ नहीं है, और वहाँ पे वो एक्सेप्ट किए जाते हैं एज अ पर्सन कि हाँ ये गोरा कुछ करता है, हाँ, एंड दैट एक्सेप्टेंस इज रियली लाइक समथिंग। पर उसके बावजूद चार्ल्स स्ट्रिकलैंड का कैरेक्टर डजंट फील एनीथिंग, ही इज जस्ट लाइक आई जस्ट वांट टू पेंट इन पीस। पर जिंदगी भी है, जीना भी है, एंड slowly he finds work around and paints till his death. तो वो भी एक विचारधारा है कि आर्ट एज ए आर्टिस्ट, आप आर्ट किसके लिए बनाते हो? अपने लिए बना रहे हो, करियर के लिए बना रहे हो, कमीशन के लिए बना रहे हो, या फिर बस बनाने के लिए बना रहे हो? और अगर बनाने के लिए भी बना रहे हो, still you have to live a life, still you have to work around, still you have to think about future, right? And काफ़ी बार मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी कटने के लिए तो कट जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर
एक चीज़ होता है कि इंसान में पोटेंशियल कितना है और क्या उसे उस पोटेंशियल को उसके एंड रिजल्ट तक ले जाना चाहिए या नहीं. और it doesn't even have to be public. It has to be personal to you. Like Charles Strickland just wanted to paint. He paint. और एक चीज़ ये भी है. I'm not sure if I should say this, पर the reason why I'm like कि young artist अभी दूर रहे इस बुक से, उसका रीज़न ये है कि it's very easy to be influenced by Charles Strickland without thinking of consequences. Yeah, without thinking the satire behind his character. At no way or no point in the novel is like Charles Strickland is great. He's amazing. जो characters कह रहे हैं कि Charles Strickland is great, amazing. Charles Strickland is a genius. Charles Strickland is a genius in the making. हम जानते नहीं थे. They are the same people who actually suffered after meeting Charles Strickland. And again, nothing to do with history. पर ये वही बात है कि that's the satire, that's the comedy behind Charles Strickland's character. और इसलिए मैं यंग आर्टिस्ट को बोला कि अभी ना पढ़े, आप थोड़ा काम कीजिए, फील्ड में जाइए, उसके बाद ये पढ़िए, पर पढ़िएगा ज़रूर. इट्स एन अमेजिंग बुक. पर coming back to the topic, कि easily आप शायद again I don't know you, but it's very easy to be influenced by a story like this of a starving artist जो सिर्फ आर्ट के लिए जिया and all that. It's a very romantic thought, but you have to live in that romance your whole life. और वो easy नहीं होता. And अगर आप कर सकते हैं, अभी भी आप कर रहे हैं, man, more power to you. Keep doing your art, keep doing your practice. पर फिर एक चीज़ ये भी होती है कि फिर आप एक्सपेक्टेशंस भी क्या रख सकते हो. ये वही बात है कि साधु को क्या चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जीने के लिए. पर वही बात है, फिर क्या एक्सपेक्टेशन है अगर आप अपने सपने को जी रहे हो. फिर देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस इफ यू आर लिविंग योर ड्रीम जॉब. बट इफ यू आर नॉट हैप्पी विद इट, और इफ इट देयर आर मोर कॉन्स देन प्रो, देन ऑफ कोर्स यू शुड कंसिडर और रिकंसिडर. पर just random thoughts in my head. It's just an opinion. You don't have to follow my opinion. मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और हो सकता है कुछ सालों के बाद मैं मेरा ओपिनियन चेंज भी कर दूँ. पर फिलहाल इस समय के दौरान ये मेरा ओपिनियन है इस चीज़ को लेके कि अगर आप एक एक्सेप्टेशंस के साथ चल रहे कि एज ए आर्टिस्ट मुझे एक गोल पे पहुँचना है, तो गोल रास्ते से होते हुए पहुँचा जाता है. तो यू नीड अ रोड मैप, यू नीड अ प्रोफेशनल रोड मैप एंड कंसिडरेशन के कैसे आप नेविगेट करेंगे ये आर्ट मार्केट को, इफ़ यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट. और अगर आपके लिए आपका आर्ट सेक्रेड है, आपके लिए आपका आर्ट चेंज नहीं करेंगे बिकॉज यू फील समथिंग मोर पर्सनल टू योर आर्ट, तो फिर आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि उसको मैं करियर बनाऊंगा. आप फाइनेंशियल सोर्सेज कुछ और कर सकते हैं, आप अपने हॉबीज़ को डेवलप कर सकते हैं. आर्ट इज समथिंग यू डू फॉर योर सेल्फ एट दैट पॉइंट, एंड यू स्टिल हैव योर लाइफ टू लिव एंड यू स्टिल हैव योर लाइफ टू फिगर आउट. तो अगेन जस्ट random thoughts. This is chill time. Hey, this is chill time. We are just here to chill and share our thoughts while drawing and doing work. So thank you for putting this on in the background. There are more books which I want to cover in the next episodes. So please stay tuned for that. Like, share, subscribe.
पर प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं ये चैनल को कंटिन्यू कर सकूँ और मैं और वीडियोस बना सकूँ. इट इज़ जस्ट गोइंग टू हेल्प द चैनल. इस साल मेरा गोल है 10,000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. I know that it's a huge goal for me, but I hope I can pull it off. अगर आप सबका साथ रहेगा तो क्यों नहीं. And on that note, I want to say thank you for staying by me in this last 3 years where the channel was in hiatus. आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट और इंटरेक्शन इन पिछले 3 सालों में जितना मैं इंटरेक्ट आपसे किया, it was very inspiring and very nice and very kind. जिस तरह से कुछ मेरे जूनियर्स मुझे मिले और कहा कि अरे आपने वो वीडियो बनाया था, वो वाला वो बहुत अच्छा था, और I was just moved by that emotion, man. Like, because I completely thought that that's it, you know, the channel is over, KKB Design Studio is over, this is it. And इस तरह के comments, इस तरह के interaction ने ये ड्रीम को थोड़ा जिंदा रखा कि चैनल वापस शुरू करते हैं, चीज़ें वापस शुरू करते हैं. So yeah, so thank you so much for staying by me in this past 3 years. So that's it. थोड़ा heavy हो गया ending, but hey, it's still time. So thank you so much for watching. Thank you for playing this video in the background while you work. So thank you so much for that. And please subscribe and share with people who would be interested in just chilling, just vibes. So thank you so much, and see you in the next one.